हेलो। वीडियो पे क्लिक करने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू देने की 10 टिप्स दूंगा जिससे आप अपने अगले इंटरव्यू को एस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, इंटरव्यू एक आर्ट है और आप इसकी प्रैक्टिस कर करके मजीद बेहतर हो सकते हैं इसके अंदर। सो आई वुड रिकमेंड कि हर कोई इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करे, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करके उनका फीडबैक भी ले। ये आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? करियर फेयर्स, फ्रेंड्स और करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है। सो टेक फीडबैक एंड इम्प्रूव। स्टेप नंबर 2, ये टिप एप्लीकेबल है कि आपका इंटरव्यू इन पर्सन हो या वर्चुअल हो। ऑलवेज अराइव एट द इंटरव्यू डेस्टिनेशन 15 मिनट्स इन एडवांस। हमेशा अपने लिए बफर रखें जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर आप इंटरव्यू ऑनलाइन दे रहे हैं तो ट्राई टू लॉग इन 10 to 15 मिनट्स अर्लियर एंड रिमेंबर ऑलवेज टू हैव ए बैकअप इंटरनेट कनेक्शन। नंबर 3, अपने इंटरव्यू के बाद हमेशा थैंक करें आपके जो इंटरव्यूअर्स थे। यू कैन ड्रॉप देम अ वेरी स्मॉल ईमेल और अ स्मॉल नोट एंड यू कैन से थैंक यू फॉर this opportunity to interview at this wonderful organization, and I remain at your disposal if you want or if you have any questions. This always leaves a good impression. अगर आपका इंटरव्यू especially अगर in person हो रहा है and you go to the organization, try to be as polite, and yeah, वैसे this tip is true for all spheres of life, but try to be as polite as possible to everyone, be it the security guard that greets you at the entrance, the receptionist, or anyone that you encounter. Be on your top behavior and be disciplined. और ये वैसे भी आपको हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि you never know, आपका फीडबैक कहीं से भी आ सकता है। If you're being nasty to someone, obviously it's not a good idea and you should never ever do that. Next step ये है कि try to answer in the STAR approach: situation, task, action, result. इसके ऊपर मैंने कुछ और कंटेंट भी बनाना है in the future to go into more details, but basically when somebody asks you a question, it's very important to follow a structure ताकि आप ramble on ना करें, ताकि आप focused रहें. So if somebody asks me a question, situation, क्या time था, what were the company objectives at that time, what were the goals, the task, कि आपके exact goal था क्या, what did your line manager expect you to do, action, वो कौन से एनालिसिस थे, कौन सी स्ट्रैटेजी थी, कौन सी सेलिंग स्ट्रैटेजी थी, कौन सा मार्केटिंग प्लान था जिससे आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिला। एंड द रिजल्ट शुड ऑलवेज बी क्वांटिफाइड एज मच एज पॉसिबल। यू कैन से ग्रोथ नंबर्स, परसेंटेजेस, कॉस्ट सेविंग्स, जो भी है, बट ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। स्टार अप्रोच के ऊपर मैं एक वीडियो इन द फ्यूचर भी बनाऊंगा बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप, ऑलवेज ट्राई टू बी प्रोफेशनली ड्रेस्ड। इवन अगर आपकी कंपनी के अंदर कल्चर जो है वो कैजुअल क्लोथिंग का है, बट ट्राई टू वेयर प्रॉपरली आयरन प्रेस्ड क्लोथ्स एंड ट्राई टू ड्रेस फॉर्मल। मे बी अ टाई कुड बी टू मच, बट बिजनेस कैजुअल इज द वे टू गो। आप अच्छा शर्ट टक इन करके प्रॉपरली आयरन होके जाएं। You should look the part, you should dress for the part, and it's always good to overdress than underdress, right? So try to do that. Try for the interview, always research on the company, उनके क्या projects हैं, उनका क्या turnover है, उनके कौन से products हैं, and it's very very important to get familiarized with what the company is doing, and it's very important कि आप उनकी values और objectives or goals or vision or company statement को भी study करें, and you build your answers or your interview according to that, which leads me to the next point: behavioral questions. बहुत कंपनीज जो है वो इंटरव्यू इस तरह से करती है कि they don't ask you exactly for points about your CV, but what they ask you is that आप कोई इस सिचुएशन में जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या जहाँ पे आपको प्रपोजल आपको किसी को एक्सेप्ट कराना था, तो what did you do? और बिहेवियरल क्वेश्चंस जो है ये इंटरव्यूइंग की एक बहुत अच्छी टेक्निक है. सो हाउ डू यू आंसर दोज क्वेश्चंस? The idea is again to link the question with one of your work experiences and then try to answer it in ideally the STAR approach. Behavioral questions जो है वो बहुत important है and you can study behavioral questions online. They're available. इसके अंदर आपके strengths and weaknesses questions भी आ जाते हैं और मतलब there's a vast array of questions that you can find online. So I would suggest that you study them and research the answers. There's a lot of material available. Practice makes you perfect. नेक्स्ट स्टेप, डोंट पैनिक अगर आपको लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है. अब गलत हो गया तो गलत हो गया. नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट इट ड्यूरिंग द इंटरव्यू इटसेल्फ. व्हाट आई एडवाइस यू इज जस्ट स्माइल and move forward and try not to think about that answer
and try your best to do better in the next question. And this leads me to my next point as well, is that oftentimes when a interviewer asks you a question, बहुत से लोग बिलीव ये करते हैं कि हमें इसका फौरन जवाब देने की ज़रूरत है, and they don't take time to, let's say, formulate their answer. So what I would suggest on that is, it's okay to take a few seconds that okay, I need some time to think about the answer. It's fine, आप ये कह सकते हैं. ये impromptu conversation नहीं हो रही होती कि you have to do rapid fire कि उन्होंने पूछा and आपको फौरन whatever you think आपको बोलना चाहिए. You can take some time to think. अगर आप बहुत awkward feel कर रहे हैं तो what I do is I ask for a glass of water जब भी वो पूछें starting में interview से कि if you want something, and you can always sip on water when they ask you the question so that it gives you some time to think. This is one way of going about this thing. It's always good कि आप towards the end of the interview कोई follow up questions रखें from the interviewer. You can ask them about the process कि how long can you expect to hear back from them. You can also ask about them about some projects or some initiatives, some social work that the company is doing, and which is probably linked to whatever job role that you're applying for, just to show that you have research about the company. Normally it is said that these questions do not have a bearing on your interview results, but why waste an opportunity to potentially make a good impression on the people who are hiring you, right? Interview ke start mein, the first thing that they can ask you is, tell me about yourself. So the idea is that you have an elevator pitch ready, जो कि roughly 1 minute की हो, इससे ज़्यादा ना हो, and you should make it as powerful as possible. तो इसके अंदर आप walk through करें उनको from the past, कि आपका जो भी bachelor's था, internship experience थी, timeline आपकी इस तरह से flow करनी चाहिए, then post university work experience, and then you say कि आपकी top 3 skills के हैं जो कि आप potentially जिस role में apply करें उसके अंदर आप contribute कर सकें. And my final tip, body language. Try to be confident, relaxed. अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो अपना कैमरा एंगल को एक अच्छे लोकेशन पे रखें, और बैकग्राउंड शुड बी न्यूट्रल, शुड नॉट बी टू ओवरपावरिंग कि वो डिस्ट्रैक्ट करे. कोई अगर आपकी कोई बहुत ही फैंसी किस्म की पेंटिंग है अगर बैकग्राउंड में, तो इट कुड बी डिस्ट्रैक्टिंग. इट शुड लुक फॉर्मल. एंड ऑन द बॉडी लैंग्वेज पार्ट, बी रिलैक्स, बी ओपन, बी फ्रेंडली, स्माइल. डोंट स्माइल टू मच. यहाँ पे कोई यहाँ पे शुगर लगाने या तफरी करने नहीं आए हुए. इस तरीके से मैंने लाहौर और कराची दोनों को केटर करने की कोशिश की है. बी एमिकेबल, बी फ्रेंडली, बट विद इन लिमिट्स, एंड बी रिलैक्स्ड. You got this. So these are some of the top interview tips that can definitely help you in your next interview. Please write in the comments if you have any questions or any comments और अगर कोई भी आपको चीज़ हो जिसमें आपको मज़ीद information चाहिए. Stay tuned. I hope you ace your next interview. आप मेरी CV building की भी वीडियो देख सकते हैं which is relevant to this topic. Good luck. Subscribe, like and share. Take care and good luck.